To interest and amuse. Option B should be correct. Next question. What is typically the outcome of a comedy for the chief characters? Then here is Happy ending. a happy ending. Very nice. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं विच फॉर्म ऑफ मीडिया इज कॉमेडी मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है And please. वेरी नाइस स्टेज प्लेज एंड फिल्म्स गुड नाउ नेक्स्ट देखते हैं रोमांटिक कॉमेडीज ऑफन इन्वॉल्व व्हाट सेंट्रल थीम क्या Love होना affair चाहिए had and happily. यस गुड अ लव अफेयर दैट एंड्स हैप्पीली नेक्स्ट आता है विच शेक्सपियरियन प्ले इज एन एग्जांपल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी As you इसका like it. एग्जांपल है गुड एज आई लाइक इट नेक्स्ट आते हैं इन रोमांटिक कॉमेडीज वेयर डू कैरेक्टर्स ऑफन escape to resolve their conflict क्या Green होना चाहिए wood यहाँ पे or forest. good a green world or forest option C should be correct next देखते हैं who developed the concept of the green world in romantic comedy क्या होना चाहिए Not यहाँ पे fire. not yes not a fire नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सटारिक कॉमेडी सटारिक कॉमेडी का जो मेन फोकस होता है Mocking political or social instructions. यस Institutions. हाँ मॉकिंग पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं हु इज कंसिडर्ड द अर्ली मास्टर ऑफ सटारिक कॉमेडी अर्ली मास्टर की बात की जा रही है तो Aristophanes. क्या होना चाहिए नहीं Ben एरिस्टो Jonson. नहीं ये इंग्लिश में आएंगे मैम जी. जी तो यहाँ पे इंग्लिश की बात तो की नहीं जा रही यहाँ पे अर्ली की बात की अर्ली जा रही है ना जी मैम अरिस्टोफेंस सही. अर्ली मास्टर ऑफ सैटारिक कॉमेडी क्या होना चाहिए यहाँ पे एरिस्टोफेंसी सही तो है होना मैम. चाहिए जी मैम हाँ सही. कोई कंफ्यूजन नहीं ना हाँ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज प्लेज इज एन एग्जांपल ऑफ सैटारिक कॉमेडी बाय बेन जॉनसन क्या होना चाहिए Alchemist. अल्केमिस्ट Alchemist. अल्केमिस्ट हाँ गुड ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं द कॉमेडी ऑफ मैनर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ट्रेडिशन क्या होना चाहिए यहाँ पे ग्रीक न्यू कॉमेडी ऑप्शन should be correct. Next देखते हैं which English playwright is associated with early examples of the comedy of manners. तो early example क्या है? William Shakespeare. Option A should be correct. The comedy of manners reached its peak during which period in English drama? Then here is a restoration period. ध्यान Restoration देखिएगा period. जो कॉमेडी ऑफ हाँ कॉमेडी ऑफ मैनर की बात की जा रही है रेस्टोरेशन पीरियड पे अपने पीक पे था ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या होना चाहिए यहाँ पे The द way वे of ऑफ द word. गट ऑप्शन यस द वे ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डायलॉग इन अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होना चाहिए यहाँ पे The party and सेंटिमेंटल clear. ओहो सॉरी सॉरी यस यस रिपार्टी एंड विट एक्सचेंजेस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डायलॉग इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें ना देन जी ऑप्शन मैम. बी शुड बी करेक्ट नेक्स्ट आता है विच प्ले बाय ऑस्कर वाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिवाइव्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होना Importance चाहिए of being earnest. Good. The importance of being earnest. Option B should be correct. Next आता है what distinguishes for fars from other types of comedy. Then here is a broad humor Humor. and exaggerated situations. Situation. Option हाँ. Next आता है what type of humor is commonly found in farce. क्या होना चाहिए यहाँ पे slapstick and physical humor. Option C should be correct. Next आता है which of these American play is an example of a farce? Then here is a Charlie's Aunt. Option B should be correct. Next question आता है 20 देख लेते हैं. In farce, exaggerated character types find themselves in what kind of plot? Then here is a improbable and ludicrous. Option A should be correct. Now next 21.
Which ancient playwright is known as the master of satiric comedy? Satiric comedy की बात कर रहा है, क्या होना चाहिए? Aristophanes. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 22. Which Shakespearean play is an example of a romantic comedy that features the green world concept according to Northrop Fryer? Then here is a Midsummer Night Dream. Option B should be correct. Next question 23. Which type of comedy is known for focusing on witty dialogue, a repartee, and upper class society? Then here is a comedy of manners. Option D should be correct. In which type of comedy do stock characters like the clever servant and stodgy parents commonly appear? Then comedy of manners. Option C should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रेव। विलियम कॉन्ग्रेव ने क्या लिखा था? द वे ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 26। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लीज एन एग्जांपल ऑफ फार्स। फार्स का एग्जांपल क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है which dramatist works are associated with love duels between intelligent and witty characters? Then here is a William Shakespeare. Option D should be correct. Next question 28 में क्या है? Who revived the comedy of manners in the 18th century with works like The Rivals? Then here is a Richard Brinsley Sheridan. R.V. Sheridan. Option B should be correct. Next question. Which theory explains the influence of bodily fluids on a person's character used in Ben Jonson's comedy of humors? Then here is a theory of four humors. चार उनके humors थे। कौन कौन से थे? आप लोग को अच्छे से लर्न होगा। जी सुन पा रहे हैं सब लोग हमको? नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग Yes, इज अ ma'am. प्राइमरी। हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ फार्स। क्या होना चाहिए? कैरिकेचर्ड कैरेक्टर्स। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच प्ले बाय शेक्सपियर इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ लो कॉमेडी particularly in its use of slapstick and physical humor. Then here is a the taming of the shrew. Option A should be correct. Next question 32. Which famous French playwright greatly influenced Restoration comedy? Then here is a Molière. Option A should be correct. Now, who wrote She Stoops to Conquer, a comedy that revived the wit of Restoration plays while avoiding indecency? Indecency. Then here is a Oliver Goldsmith. Option B should be correct. Next question. What distinguishes high comedy from low comedy? Then here is a intellectual and witty dialogue. Option C should be correct. Next question 36. Sorry 35. 35 में क्या है? Which of these comedies is noted for its use of repartee and witty conversation? Then here is a country Country why. wife. Good. Option B should be correct. नेक्स्ट आते हैं who is the notable playwright associated with developing the comedy of humors? Then here is a Ben Jonson. Option B should be correct. Yes, next आता है 37. What type of comedy typically features exaggerated ludicrous situations designed to provoke hearted, hearty laughter? Then here is the farce होता है। हाँ फार्स होता है ना, फार्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जिसमें हंसी शो की जाती है वही होगा फार्स। नेक्स्ट आते हैं हु रोट वेलपॉन एन एग्जांपल ऑफ सैटारिक कॉमेडी। किसने लिखा था? बेन जॉनसन। Then वेल नोन। यस गुड। नाउ 39 में देख लेते हैं इन एज यू लाइक इट विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द use of high comedy through written verbal humor. Then here is a Rosalind. Option B should be correct. हम रोज Next आता है होगा कि टेस्ट होगा?
ओहो, यहाँ पे तो वैसे रोजालिंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी बात, लेकिन विट की बात की जा रही है ना, विट एंड वर्बल ह्यूमर की बात की जा रही है ना। टच स्टोर नहीं होगा मैम क्या? नहीं, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि विट नहीं, है। रोजालिंड ही है। हाँ, क्योंकि ये विट है ना, रोजालिंड इसको है, ये समझिए। इक्वल टू बेनेडिक्ट बियाट्रिस की जो जैसी विट वहां पर हाँ, स्पीच होती है, वैसी स्पीच रोजालिंड यहाँ बोलती है। यहाँ पर रोजालिंड ही यहाँ सही होगा। सिर्फ सिर्फ ह्यूमर को आप लोग मत पकड़िए, यहाँ पे हाँ। देखिए विट एंड वर्बल ह्यूमर की बात की जा रही है ना, अब थोड़ा जी मैम, बुद्धि जैक्स जी मत जो मैम, है, जी मैम। जैक्स ओके जो है मैम। मेलैंकोलिक करेक्टर है। नहीं, जैक नहीं, इन लोगों का कहानी है कि क्या यहाँ पे टच स्टोन हो सकता है ऐसा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ लेकिन पे टच रोजालिंड ही स्टोन है। जो रहता है, हाँ, टच स्टोन के लिए यहाँ पे विटी डायलॉग तो उसका नहीं होता ना, थोड़ा हाँ हाँ ह्यूमर होता है, ह्यूमरस होता है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट आता है, ओके मैम। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। 40 देखते हैं, which Shakespearean character is known for providing low comedy through clownish behavior and slapstick antics in Twelfth Night. Then here is a Sir Toby Welch. Option C should be correct. Next आता है, which of the following is an example of a Shakespearean romantic comedy? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? As you like it. कहाँ है? B ऑप्शन में। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 42, विच सेटिंग इज कंसिडर्ड द ग्रीन वर्ल्ड इन? क्या होना चाहिए? द फेरी हॉन्टेड वुड। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 43 में, इन शेक्सपियर्स मच अडो अबाउट नथिंग विच टाइप ऑफ कॉमेडी इज प्राइमरली डिस्प्लेड? मच अडो अबाउट नथिंग की बात कर रहा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, उसी में तो मच अबाउट नथिंग में ही तो बैटरीज और बेनेडिक्ट है, क्यों? कैरेक्टर यस वही तो मैम। है, पूछे भी, हाँ पूछे भी जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्लेस कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ फार्स particularly in the knock about scenes? Then here is a सेमिनोर। determine of the shape. Good. नेक्स्ट आता है, what is the predominant comic element in Shakespeare's The Merry Wives of Windsor? क्या होना चाहिए? फार्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 में क्या है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले कॉमेडी ऑफ मैनर डज द इंगेज इन अ विटी लव डुअल? क्या होना चाहिए यहाँ पे? मच अडो अबाउट नथिंग में जो बेनेडिक्ट और बैट्रिस होती है ना, उन दोनों में क्या होता है कि एक नोक झोंक होता है, लेकिन बड़ा विटी नोक झोंक होता है ना। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, in the Merry Wife Windsor, which character contributes to the low comedy through his farcical behavior and repeated humiliation? Then full stop well known है। Option A should be correct. Next देख लेते हैं 48 में, in Shakespeare's The Taming of the Shrew, what is the significant feature that provides comic relief? क्या होना चाहिए? The farcical physical humor and exaggerated situation. Option C should be correct. नेक्स्ट देख लेते हैं 49 में क्या है, which of the following plays by Shakespeare is considered an example of high comedy due to its sophisticated, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैसी चीजें दिखाई गई, sophisticated wit and clever dialogue। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, क्या होना चाहिए? much ado about nothing। Today's last question is, what is the key feature of high comedy in Shakespeare's Twelfth Night? तो witty banter and intellectual humor। बैंटर जानते हैं आप लोग क्या होता है? बैंटर मीन्स होता है कि किसी का उपहास उड़ाना, लेकिन किस तरीके से? बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बता सकते हैं जी।